everyone, I am Megha Pathak from DPS Saldani Lamachor, your bio teacher. Children, today we are going to discuss the topic hierarchy of classification groups. Okay, so first of all we will learn about taxonomic categories. So what are taxonomic categories? Taxonomic categories are ranks or grouping of organisms, okay, developed into a system of a classification on the basis of their similarities and dissimilarities. Okay, so what are important taxonomic categories in which we have categorized the organisms? देखिए हमने जो organisms को categorize किया है उनकी similarities और differences के basis पे. So what are these categories? First is kingdom, phylum और division. देखिए plants में हम उसे division कहते हैं और animals में उसे phylum बोला जाता है. And the third category is class, order, family, then genus and then species. ओके और जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं. ओके नाउ चिल्ड्रन लेट्स स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड द फर्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज किंगडम. इट इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी like kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Animalia, etc. And the second taxonomic category is division और phylum. देखिए plants में हम division लिखते हैं और animals में हम उसे phylum कहते हैं. So it is a taxonomic category which is subordinate to kingdom and higher in rank to class. Besides having all the characteristics of the kingdom, members of a division or phylum, they possess their own specific common characters. And the third taxonomic category is class. And this taxonomic category is higher than order and subordinate to division and phylum. Okay? Its members have common characters of kingdom, division, phylum. देखिए क्लास में जो भी कैरेक्टर्स किंगडम में होते हैं और फाइलम और डिवीजन में होते हैं वो सभी कैरेक्टर्स क्लास में होते हैं. मींस क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज्ड हैं उनमें वो सभी कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उसे किंगडम में, फाइलम, डिवीजन में क्लासिफाई करते हैं. लाइक क्लास मेमेलिया. एंड नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ऑर्डर. एंड दिस कैटेगरी लाइज बिटवीन क्लास एंड फैमिली. And all members of an order possess their own correlated characters. For example, Primata and Carnivora. These are the examples of order. Now next taxonomic category is family. It represents by a group of related genera that are more similar to each other than with the genera of other families. And you know children, cat and lion, they both belong to the same family which is Felidae. And now genus. Genus is a group of species which are related and have less characters in common as compared to species. देखिए सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज़ के मेंबर्स में होती है, एक स्पीशीज़ के मेंबर्स में, और उससे कम जीनस में. मीन्स मेंबर्स ऑफ अ सेम जीनस शो सिमिलैरिटीज़. फॉर एग्जाम्पल देखिए जो टाइगर है इसका भी जीनस पैंथरा होता है और लायन का जीनस भी पैंथरा होता है. लेकिन टाइगर की स्पीशीज़ है टिग्रिस और लायन की स्पीशीज़ होती है लियो, बट दोनों का जीनस सेम है. एंड नाउ लास्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज स्पीशीज़. इट इज़ द लोएस्ट और द बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ सिमिलर morphological characters which are able to breed among themselves and produce fertile offspring. And individuals of the same species resemble each other closely, structurally and functionally. देखिए एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं. ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी सिमिलर होते हैं एंड द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ दे आर एबल टू इंटरब्रीड एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. चिल्ड्रन, यू नो, horse and ass, they belong to same genera which is Equus, but horse species is Caballus and ass, its scientific name is Equus asinus. मीन्स दोनों का ही
सेम जेनरा है, सेम जीनस है, लेकिन दोनों की स्पीशीज अलग है. एंड चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन द मेन स्क्रीन, one classification is done. It is the classification of human beings. Like you can see, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species are written here. Children, Aristotle have divided the living world into two kingdoms, Planta and Animalia. And Linnaeus also divided the living organisms into two kingdoms, Kingdom Planta and Animalia. And Ernest Haeckel, he raised a third kingdom of Protista to accommodate organisms that do not show differentiation of tissue. And Copeland, he created the kingdom of Monera for prokaryotic organisms. And Robert H. Whittaker, he classified organisms into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Planta, and Animalia. And Carl Woese, he divided the kingdom Monera into Archaebacteria and Eubacteria. So children, today we are going to study about kingdom Monera. Okay? So Monera is the kingdom of prokaryotes. Prokaryotes, we have already studied about them, that these are unicellular organisms. Therefore, Monera is also called prokaryota. Okay? Now let's study the main characteristic features of the organisms which are grouped in kingdom Monera. जिनको Monera में रखा गया है उनमें क्या special features होते हैं? Okay? First, they are prokaryotic in nature. Children, we have already studied about prokaryotic cells in cell chapter. Okay? So these organisms, they are unicellular. Unicellular means उनमें ये केवल single cell होते हैं. Okay? And membrane bound cell organelles are absent. क्योंकि prokaryotic cells में कोई भी membrane bound cell organelle नहीं होता है. Okay? And next, these organisms are both autotrophic and heterotrophic. So what are autotrophic? Autotrophic are the organisms that can prepare their own food with the help of simple inorganic things. Okay? And they are heterotrophic also, means they are dependent on other organisms for their nutrition requirement. Okay? And next, some of them have cell wall and some of them, they do not have any cell wall. कुछ organisms में cell wall होती है और कुछ organisms में cell wall नहीं होती है. Now, let's study the examples. Bacteria, blue-green algae or cyanobacteria and mycoplasma. These are the examples of the organisms which are grouped in kingdom Monera. Children, these are the examples of the organisms which belongs to kingdom Monera, like bacteria and blue-green algae, or we call them cyanobacteria. For example, Anabaena. Now children, let's study about the kingdom Protista. It is the kingdom of unicellular eukaryotes. देखिए इस kingdom में जो organisms हैं वो unicellular eukaryotes हैं. And they are especially protist and they have simple unicellular and eukaryotic organization. There is a true nucleus and a membrane bound other cell organelles. देखिए इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स दे आर आल्सो मेम्ब्रेन एंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन इज जनरली प्रेजेंट. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें लोकोमोशन होता है. लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट, एंड इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला जो कि यूग्लिना में होता है, एंड सीलिया विच आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम, एंड स्यूडोपोडिया जो कि अमीबा में होते हैं. दीज आर कॉल्ड लोकोमोटरी ऑर्गन, जिनसे ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प मिलती है. मीन्स इन स्ट्रक्चर्स की वजह से ये मूव करते हैं. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक विच अकर्स इन डायटम्स एंड हेट्रोट्रॉफिक जो कि अमीबा में होता है. मीन्स ऑर्गेनिजम्स दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर एल्गी, डायटम्स and protozoans like amoeba, euglena and paramecium. Children, these are the examples of organisms which belong to kingdom Protista. Now let's study about the kingdom fungi. Fungi are achlorophyllous, heterotrophic, spore producing, cell wall containing eukaryotes. देखिए जो fungi होते हैं इनमें chlorophyll नहीं होता है and the mode of nutrition is heterotrophic and they have cell wall. They produce spores
and they are eukaryotes. Now children, let's study the main characteristic features of this kingdom. These are heterotrophic eukaryotic organisms. ये heterotrophic होते हैं, means they are dependent on other organisms for their nutrition requirement. And most of them are decomposers. That is why they are called saprotrophs, which feed on decaying organic material. देखिए ये जो organisms होते हैं ये dead और decayed matter पे survive करते हैं. Means most of the members they are saprotrophs. And others, they require a living protoplasm of a host organism for food. और इसीलिए इन्हें बोला जाता है parasites. देखिए जो saprotrophs होते हैं they depend on dead and decayed matter. And जो इस kingdom से belong करते हैं other organisms means other fungi, they are parasites. क्योंकि वो दूसरे organisms पे living organisms पे grow करते हैं और उन्हें harm पहुंचाते हैं. They have cell wall which is made up of tough complex sugar called chitin. इन organisms में cell wall भी होती है, means इनकी जो cell है उसमें cell wall होती है, which is made up of a complex sugar which is called chitin. For example, yeast, molds like rhizopus and mushrooms. Children, these are the examples of the organisms which belongs to fungi like Aspergillus, Penicillium, Agaricus, जिसे हम mushroom भी बोलते हैं. Children, you know, some fungal species live in permanent mutually dependent relationships with blue-green algae or cyanobacteria. Children, there are some fungal species which live in permanent mutually dependent relationships. देखिए कुछ फंगल स्पीशीज ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं एंड सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड symbiotic association. And the symbiotic life forms are called lichens. And we have already studied about lichens in the chapter Natural Resources. Symbiotic association is formed between an alga and a fungus. See, the alga manufactures food not only for itself but also for fungus. And in return, fungus provides protection to alga and helps in fixation and absorption of water as well as minerals. Lichens, they are slow growing, large colored patches on the bark of trees. And children, we have studied in Natural Resources chapter that lichens, they are pollution indicator. ये उस जगह कभी ग्रो नहीं करते जहाँ पर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है.